Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Razia Bashir from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. I am co-trainer for the practicals of Zoogeography and Paleontology with Dr. Muhammad Mundassir Shehzad. Today we are going to have the practical of Zoogeography and Paleontology, which is the study and identification of rocks. Coming to a brief introduction to the study of rocks. A rock is any naturally occurring solid mass or aggregate of minerals or mineraloid matter which is categorized by its mineral composition, its chemical composition, and the way in which it is formed. The scientific study of rocks is called petrology. Dear students, if we talk about how the rocks can be classified, first of all, रॉक्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए उसके अंदर रॉक्स के कलर्स की मदद से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रॉक्स के टेक्सचर की बुनियाद पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड फर्दर ऑन द मिनरल कंपोजिशन इन विच दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड, जिनकी बुनियाद पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. If we talk about the texture of these rocks, texture may be in the form of size, in the form of shape, or in the form of pattern in which the rocks are formed. If we talk about the rocks color, how the rocks are appeared in their color from inside and from outside. If we talk about the mineral composition of these rocks, हर रॉक के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. तो वो जो मिनरल्स हैं उनकी कंपोजिशन कितनी है, मिनरल्स कितने मिकदार में किस रॉक के अंदर मौजूद हैं और कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर जो हमारे पास ये रॉक्स होती हैं हम इनको बआसानी आइडेंटिफाई या उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. Rocks are divided into three main families which are based on how they are formed. We have the igneous rocks, the sedimentary rocks, and the metamorphic rocks. Each group of rock contains a collection of rock types that differ from each other on the basis of their size, their shape, and arrangement of mineral grains. As the classification of rocks is based on the process how they are formed. So the igneous rocks are basically formed when magma cools and makes crystals. Magma is a hot liquid which is made of melted minerals. When magma pours onto the earth's surface, it is called lava. The minerals can form crystals when they cool, and this is known as the igneous rock. Some examples of the igneous rock include granite, scoria, pumice, and obsidian. The next type is sedimentary rock. The sedimentary rock actually are formed when different particles from the water and wind they are deposited and settled. If you have walked along a beach, you see tiny sand and grain particles and pebbles, which are known as the sediments. Eventually, these sediments they settle from these areas into sedimentary rocks. So, the sedimentary rocks basically they come from four ways: the erosion process, then deposition, compaction, and cementation. A few examples of the sedimentary rocks include sandstone, limestone, shale,
conglomerate, and gypsum. The third category is the metamorphic rocks. Metamorphic rocks are rocks that have morphed into another kind of rocks. These rocks were once igneous or sedimentary rocks. Then how the sedimentary and igneous rocks they have been changed? The rocks are usually changed when they are under tons and tons of pressure, which fosters heat building up and this causes them to change. If you examine metamorphic rock samples closely, you will discover how flattened some of the igneous rocks can be. Here you can see some examples of the metamorphic rock. These include marble, slate, quartzite, and gneiss. For the practical purpose, our main focus is how to identify a rock sample. When classifying a rock sample, a geologist usually observes the following things: the process or way how they have been formed. The second thing that is observed while identifying a rock sample is its color. A geologist also observes the texture of a rock in order to understand which type of rock it can be. In the texture, usually a size, shape, and pattern of its grain are observed. Finally, we have to look into the mineral composition of a rock sample in order to understand whether it is a sedimentary rock, it is a metamorphic rock, or it is a volcanic rock. The first thing a geologist considers in order to understand the rocks is the way how they have been formed. There are three basic rock types: the igneous rocks, the sedimentary rocks, and the metamorphic rocks. Igneous rocks are the rocks which are formed of interlocking crystals. These are tough, hard, and resistant to erosion. Usually, igneous rocks are formed by the cooling of molten magma or lava. If they have been formed underground, these are known as the intrusive igneous rocks. When they form on ground, they are known as the extrusive igneous rocks. Examples of the igneous rocks include basalt and granite. Sedimentary rocks are the rocks which are formed in layers which are called as strata. Often these rocks contain fossils. These are tough and sometimes they are weaker than igneous or metamorphic rocks. Sedimentary rocks are formed by the compaction of sediments, usually which are deposited by sea. Some examples of the sedimentary rocks include sandstone, limestone, shale, and clay. Metamorphic rocks are formed of interlocking crystals, which are very tough and resistant to erosion as well. Metamorphic rocks are mainly formed by heat and pressure. Usually by heat and pressure, sedimentary or igneous rocks they change into the metamorphic rocks. Slate and marble are some common examples of metamorphic rock. Apparent color of a rock from inside and outside can also be used in order to identify various rock types. Here we can have a few examples of the rocks based on colors. Limestone, which is a sedimentary rock, appears white. It is used in making cements. It usually fizzes with acid. Coal, which is a sedimentary rock, appears black in color and usually sets in fires and can easily be burned. Chalk, which is a sedimentary rock, appears white. It is used in writing and it can easily be washed away. Sandstone, which is a sedimentary rock, appears red. It is used in building material. It usually made up of small grain-like grains.
Pumice is an example of igneous rock which appears grey in color. It usually uses in bath scrubs. Being lightweight, it floats on water. Granite is an example of igneous rock which appears pink. It is used in making trapstones and it can easily be polished. Slate is an example of metamorphic rock which appears grey in color. It is also used in making roof materials. It splits easily into thin sheets. Marble, which is an example of metamorphic rock, appears white in color. It is usually used in making statues and is also fuses with acid. When identifying a rock sample, a geologist also observes the texture of rocks. The texture includes size of its grains, shape of its grains, and pattern of the rock grains. As in the texture, we have three things. The first thing is the grain size. Often the grains in a rock are large and easy to observe. Such rocks are said to be coarse-grained rocks. In other rocks, the grains are so small that they can only be seen with a microscope. These are known as the fine-grained rocks. Here you can see slate is an example of fine-grained rocks, whereas diorite is an example of the coarse-grained rock. You can notice the difference in texture between the fine-grained slate and the coarse-grained diorite. The grains in a rock often form patterns. Some grains lie in flat layers that look like a stack of pancakes. Other grains form wavy, swirling patterns, while some rocks have grains that look like rows of multicolor beads. Some other rocks, they have in contrast the grains that can occur randomly throughout the rock. Mainly based on grain pattern, rocks can be foliated or non-foliated. Where a clear banded pattern is shown, this is known as a foliated rock. As in this picture, you can see the example of a banded rock, the gneiss, whereas on the other side, the rocks where pattern is not formed are a combination of light and dark exist, which is not in a banded pattern. These are known as the non-foliated or non-banded rocks. Most of the metamorphic rocks, they occur as foliated or non-foliated rocks. It depends upon the pressure and heat which is put on the rocks. Quartzite in this picture is an example of a non-foliated or non-banded rock. The grains in a rock vary widely in shape. Some grains, they look like tiny particles of fine sand, while others look like small seeds or exploding stars. Based on the grain shape, rocks can be regular or smooth. It can be irregular or jagged. If the fragments can be smooth and rounded, like you see in this picture, the conglomerate, which is an example of a regular or smooth-grained rock. On the other side, you can see when the grain, they are irregular in shape or jagged. Such a rock is known as breccia. Here you can compare conglomerate and breccia, where the grain shape appear quite different from each other. Dear students, now we are going to discuss about the different types of texture. जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जितनी रॉक्स होती हैं, हर रॉक के अंदर कोई स्टेट डिफरेंट और
इन टेक्सचर्स की बुनियाद पर हम रॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फाइन ग्रेन्ड स्लेट। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्लेट। इसके अंदर जो टेक्सचर है इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे इनका साइज है बेसिकली बहुत छोटा है स्लेट के अंदर, और बहुत एक कंप्रेस्ड सा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आता है जी कोर्स ग्रेन, जिसके अंदर जो मिनरल्स उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द फाइन टेक्सचर। नंबर थर्ड इज राउंडेड ग्रेन्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं इनका, या जो छोटे छोटे इनके जो दाने होते हैं जो इसकी मिनरल्स या मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल हो सकते हैं, जिनकी मदद से बनती हैं रॉक्स। अब ये जो रॉक्स के अंदर यहाँ पे जो मिनरल्स हैं या जो ग्रेन्स हैं उनका साइज आमतौर पर छोटा लेकिन आमतौर पर राउंडेड फॉर्म में होता है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जैग्ड ग्रेन्स, जिसके अंदर उनकी वो खास शेप नहीं है बल्कि वो इरेगुलर शेप उनके अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। और सेकंड लास्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन बैंडेड रॉक्स को, जिसके अंदर रॉक्स तो मौजूद हैं लेकिन उन रॉक्स के अंदर कोई यहाँ पे खास टाइप के जो बैंड्स हैं वो नहीं बन रहे। और लास्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉक्स हैं और रॉक्स के अंदर यहाँ पे बैंड्स बन रहे हैं, इसलिए हम इनको बैंडेड रॉक्स का नाम देते हैं। जो आपके पास फर्स्ट वाली है फाइन ग्रेन, ये नंबर 2 है कोर्स ग्रेन्स, ये नंबर 3 है राउंडेड ग्रेन्स, नंबर 4 है जैग्ड ग्रेन्स, नंबर 5 है नॉन बैंडेड, और नंबर 6 है यहाँ पे बैंडेड ग्रेन्स। Rocks are identified based on their mineral composition. While rocks consist of aggregates of minerals, minerals by themselves are made up of a number of chemical elements with a definite chemical composition. Minerals cannot be broken down into smaller units with different chemical compositions in the way that rocks can. More than 2,300 different types of minerals have been identified in various rocks. Luckily, many are rare and the common rocks are made up of a relatively small number of minerals. These include olivine, quartz, feldspar, micas, pyroxene, and calcite. Minerals can be distinguished using various physical or chemical characteristics, but since chemistry cannot be determined readily in the field, geologists use some physical properties of the minerals to identify them. All the three basic rock types are made up of the similar minerals. However, the relative composition of these minerals make up different sort of rocks. Dear students, if we talk about the rock formation, first of all we have to discuss about the lithification. लिथिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिथोस्फीयर बनती है, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो रॉक बनती है उसको नाम दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली मुख्तलिफ जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस के नतीजे में ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास टोटल ये 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप है जी इरोजन ऑफ दीज सेडिमेंट्स, ये फर्स्ट स्टेप होगा। नंबर 2 पे क्या होता है डिपोजिशन ऑफ दीज सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स यहाँ पे इरोड होके जो सेडिमेंट्स मुख्तलिफ चट्टानों से पत्थरों से निकल के वो यहाँ पे डिपोजिट हुए हैं। नंबर 3 पे वो जितने यहाँ पे डिपोजिट हुए हैं सैंड टाइप स्ट्रक्चर्स या ग्रेन टाइप जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपस में एक कम्पैक्ट हालत में इकट्ठे होते हैं, और लास्ट में क्या होगा वो इकट्ठे होने के बाद एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इस तमाम प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन का नाम देते हैं, और इसी लिथिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट रॉक है जिसमें हम सेडिमेंट्री रॉक का नाम देते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं सेडिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेडिमेंट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर मिलते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और ट्रांसफॉर्म होके एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेडिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके अंदर टोटल 3 पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट ए के अंदर बेसिकली क्या होगा
वाटर और विंड के जो डिपॉजिट्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं सेडिमेंट्स की सूरत में। और नंबर बी पे हमारे पास क्या होगा, जो हैवी सेडिमेंट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ चले जाते हैं, और जो हल्के सेडिमेंट्स हैं जिनका जो वजन है वो थोड़ा सा कम होता है वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। अब यहाँ पे इसी डायग्राम को, इसी पॉइंट के लिए आप इसकी डायग्राम को देखें। फर्स्ट ये हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स सेडिमेंट्स की सूरत में एक दूसरे के अंदर डिपॉजिट होते हैं, वो एयर के अंदर या वाटर के अंदर वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने लूजली पैक्ड सेडिमेंट्स हैं या वो सेडिमेंट्स जिनका वजन कम है वो सारे ऊपर की तरफ, और जो डेंसली पैक्ड है जो ज़्यादा वजनी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे नीचे की तरफ जाके बैठ चुके हैं। नंबर 3 पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, द डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्लो बिटवीन द पार्टिकल्स एंड सीमेंट देम टुगेदर। क्या होगा यहाँ पे, जितने यहाँ पे डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं जो पानी के अंदर यहाँ पे डिजॉल्व होते हैं, वो डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, वो मिनरल्स उनका एक तरफ फ्लो चलते हैं, और फ्लो करने के बाद वो पार्टिकल और सेडिमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके इस तरह के उनके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं। किसी को हम यहाँ पे सेडिमेंट्री पार्टिकल्स को नाम दे देते हैं, और किसी को हम यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल का नाम दे देते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल बेसिकली कौन सा होगा, जो इन सेडिमेंट्री पार्टिकल्स के इन बिटवीन में पाया जाता है। In this table, you can have a summary of sedimentary rocks. Based on grain texture, grain size, and composition, sedimentary rocks can have various types. Like you can see, based on the texture, these can be coarse-grained, medium coarse-grained, or fine-grained. Among the coarse-grained, you have conglomerate and breccia, if the rounded particles are present or the angular particles are present. Medium grained include the sandstone, and fine grained include mostly the mud, which can be siltstone or shale. Based on the composition, the sedimentary rocks can be crystalline limestone, travertine, coquina, fossil limestones, and chalk. If they are rich in calcium carbonate are the calcite minerals. Sedimentary rocks which are rich in quartz or silica include chert, mostly which can be light colored, or flint, which can be dark colored. The gypsum based sedimentary rocks include rock gypsum, while the rocks which are rich in sodium chloride include rock salt. Rocks which contain altered plant fragments include bituminous coal. Here you can find various types of metamorphic rocks based mainly on the grain texture and grain size. Metamorphic rocks are broadly foliated metamorphic rocks or non-foliated metamorphic rocks. If the banded pattern is very clear, these are known as the foliated metamorphic rocks, and if there is no band, these are known as the non-foliated metamorphic rocks. Among the foliated metamorphic rocks, we have slate, phyllite, schist and gneiss, ranging from very fine grained size to the medium to coarse grained size. In the non-foliated metamorphic rocks, we have marble, quartzite, and anthracite. Marble is having medium to coarse grained, while quartzite have medium to coarse sized grain particles. Anthracite is having a fine sized grains. Based on the texture and mineral composition, there are various forms of the igneous rocks. Like granite is an example of a coarse-grained igneous rock which is rich in quartz minerals. Whereas diorite is an example of another coarse-grained igneous rock which is rich in amphibole minerals. Similarly, phyllite is an example of a fine-grained igneous rock which is rich in quartz,
while andesite is a fine-grained igneous rock which is rich in amphibole. Similarly, you can see various types of igneous rocks based on their mineral composition and texture of its grains. Going to sum up our today's discussion, how we can differentiate if we have different rock samples at the same place. We can use a simple key. The metamorphic rocks can be categorized based on their texture. Mostly they can be banded or non-banded. Usually they are made up of interlocking texture of large grains having foliation. If the foliation is present, usually it is in contrast of light and dark colors. While tapping a metamorphic rock, you will see a sound of ching instead of a tong. If the rock sample is an igneous rock, it can be recognized by the interlocking texture of grains and the presence of vesicules in extrusive igneous rocks mainly. Usually, and the igneous rocks are darker in color and they are heavy in weight. They usually have two grain sizes, either the very large grain size or the smaller one. The sedimentary rocks are recognized by the grains, usually which are cemented together, and mostly they are characterized by the presence of fossils. While comparing with other rock types, mainly the sedimentary rocks are lighter in color, and usually they display interlocking grains, which are also very light in weight. डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका प्रैक्टिकल, जो कि बेसिकली इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो रॉक्स हैं वो बनती कैसे हैं और उन रॉक्स को हम एक दूसरे से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, किसकी बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इस तरह हम इन तमाम रॉक्स को एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग भी कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इसकी मदद से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का टोटल हमारा प्रैक्टिकल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपने एक नए प्रैक्टिकल के साथ। अगर इस प्रैक्टिकल में किसी किस्म की कोई दुश्वारी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।